Hi kids, we are starting a new chapter today, chapter number 7, Measurement, from the book Maths 2. Measuring length by non-standard units. Length is the distance from one end of an object to the other end. जो लेंथ होता है वो एक डिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक. ओके. Then, in the olden days, people used different body parts to measure the length. These are non-standard units of length. पुराने समय में जो काफ़ी सारे लोग थे वो बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे डिफरेंट ताकि वो चीज़ों को मेजर कर सके, उसकी लेंथ पता लगा सके. ओके. बॉडी पार्ट्स सच एज फिंगर्स, हैंड स्पैन एटसेट्रा आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग. तो जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, फिंगर्स, हैंड स्पैन एटसेट्रा, ये सारे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए. ओके. लेंथ एज दे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जो ये लेंथ होती है ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है. दैट्स व्हाई दे आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. ओके. So they have shown some pictures of non-standard units of length, and the body parts are hand span, then there is palm, pace, digit, then cubit, arm span and foot span. Okay. If two persons measure the length of an object using body parts, they get different answer. अगर दो पर्सन सेम बॉडी पार्ट का यूज करके भी लेंथ मेजर कर रहे हैं, दे विल गेट डिफरेंट आंसर. ओके. सो वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ रोप, अ स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स, क्लॉथ यूजिंग क्यूबिट. We can use our foot to measure length or distance. For example, the length of a cricket pitch is 22 pace. तो हम मेजर कर सकते हैं लेंथ की रोप को, एक फ्लावर्स की स्ट्रिंग को, क्लॉथ को क्यूबिट की हेल्प से. ओके. ऑल्सो हम अपने फुट का यूज़ कर सकते हैं किसी लेंथ को मेजर करने के लिए या डिस्टेंस मेजर करने के लिए बेसिकली. और एग्जाम्पल भी गिवन है कि जो क्रिकेट पिच की लेंथ होती है वो 22 पेस होती है. ओके. पेस मीन्स फुटस्टेप्स. ओके. Measuring length using standard units. We usually measure the length of an object using a meter scale or meter rod. तो हम ज़्यादातर जो मेजर करते हैं लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की वो मीटर स्केल या मीटर रॉड का यूज करके करते हैं. ओके. देन मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. जो मीटर होती है वो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की. गॉट इट? देन we use this unit to measure the length of an object and the distance between two places. हम इस यूनिट का यूज करते हैं ताकि हम लेंथ को मेजर कर सके किसी भी ऑब्जेक्ट की और किसी डिस्टेंस को भी मेजर कर सके. For shorter slash smaller objects, we use smaller unit of length called centimeter. Shorter या smaller objects के लिए हम smaller unit that is centimeter उसका यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए. ओके. देन 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स. वी डिनोट इट एज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ओके. एग्जाम्पल. सो दिस इज अ पेंसिल which is 11 centimeter long, right? And then we have a pen which is 9 centimeter long. And then there is an eraser which is 3 centimeter long. So the length of the pencil is 11 centimeter. The length of the pen is 9 centimeter. The length of the eraser is 3 centimeter. Okay. Centimeter is the smaller unit for measuring length. Okay. Exercise 7A. A, using non-standard units to measure the following. A, the length of the television screen is equal to dash hands span. कितने hand span के equal हो सकती है? Around 4 to 5. So I'll write 5 here. Okay. B, the length of pencil equals to dash fingers. How many fingers?
we can say that two fingers, okay? Yeah, 2.5, okay? Then C, the length of the desk equals to dash handspan, around 3 handspan, okay? Then D, the length of a window equals to dash handspan, around 4 handspan, okay? B part, circle the unit you will use to measure the length for each of the following. So हमें सर्कल करना है उन यूनिट को जो कि हम यूज करेंगे पर्टिकुलर थिंग को मेजर करने के लिए, ओके? सो देयर इज अ पेंसिल, देन मीटर स्लैश किलोमीटर स्लैश सेंटीमीटर. द आंसर इज सेंटीमीटर because pencil is smaller thing, smaller object, so we use centimeter, which is the smaller unit of for measuring length. Then there is a flag, tricolor, right? So there is option kilometer slash centimeter slash meter. We can use meter to measure the length of this flag, okay? Then there is a door. So to measure the length of the door, we have option centimeter slash kilometer slash meter. Again the answer is meter. Meter का use करेंगे, okay? Then this one, to measure the distance, okay? We have option meter slash kilometer slash centimeter. So in this case, to measure distance, we will use kilometers, okay? C, study the picture given below and fill in the blanks. So there are some pictures given: park, market, school, okay? So market से park तक का distance हमें given है 2 kilometers and market से school तक का distance हमें given है 5 kilometers, okay? Now A part, the distance between the market and school is, market and school के बीच का distance we have given 5 kilometers, okay? Then B, the distance between the market and park is dash. Market और park के बीच का distance is given 2 kilometers, okay? C, dash is closer to the market. The answer is park is closer to the market. Why? Because 2 kilometers is smaller than 5 kilometers or less than 5 kilometers, right? So park is the answer. Addition and subtraction of length. Just like other numbers, we can add and subtract meter और centimeter. बाकी सारे numbers की तरह ही हम meters और centimeters को भी add और subtract दोनों कर सकते हैं. Addition of length. To add lengths, arrange them in the correct columns of units and then add separately. तो length को add करने के लिए हमें उन्हें correct column wise separately उन्हें arrange करना होता है, then हम add कर सकते हैं. Example, add 4 meter 32 centimeter and 2 meter 11 centimeter. Now the solution. Step 1, add the centimeters column. 32 plus 11 equals to 43 centimeters. Write 43 in the centimeters column. So first we need to write them separately. So there is meter and centimeter columns. Okay. So मीटर के नीचे हम मीटर लिखेंगे 4 meters, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर्स वाले नंबर लिखेंगे 32 सेंटीमीटर. Then the second number 2 meters and 11 centimeter. Okay. Then हमें सेंटीमीटर से स्टार्ट कर रहा है, इनको ऐड कर लेना है. तो 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4, 43 सेंटीमीटर्स आ गया. Okay. Then step 2, add the meters column. 4 plus 2 equals to 6 meters. Write 6 in the meters column. Thus 4 meter 32 centimeter plus 2 meter 11 centimeter equals to 6 meter 43 centimeter. इसके बाद हमें meters column को प्लस कर लेना है.
4 and 2, 6. So answer will be 6 meter 43 centimeter. Okay. Subtraction of length. To subtract lengths, arrange them in the correct columns of units and then subtract separately. तो अब लेंथ को subtract करना है तो हमें again columns में separately उन्हें arrange कर लेना है और subtract कर देना है. Okay. Example, subtract 42 meter 35 centimeter from 88 meter 96 centimeter. Solution. Step 1. Subtract the centimeters column. 96 minus 35 equals to 61 centimeters. Write 61 in the centimeters column. सबसे पहले हमने अरेंज कर लिया कॉलम वाइज मीटर एंड सेंटीमीटर. 88 मीटर 96 सेंटीमीटर, देन 42 मीटर 35 सेंटीमीटर. माइनस का साइन डाल दिया. फिर हम सेंटीमीटर्स कॉलम को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे. 6 में से 5 गए 1, 9 में से 3 गए 6, 61. ओके. Step 2. Subtract the meters column. 88 minus 42 equals to 46 meters. Write 46 meters in the meters column. Thus 88 meter 96 centimeter minus 42 meter 35 centimeter equals to 46 meter 61 centimeter. Then अब meter columns में subtraction करेंगे. 8 में से 2 गए 6, 8 में से 4 गए 4. So answer is 46 meter 61 centimeter. Okay. Exercise 7B. A. Add the following. One has been done for you. A part. So this is already done, right? यहाँ पर सेंटीमीटर कॉलम्स में सबसे पहले ऐड किया है. 2 में 5 7, 3 में 4 7 एंड देन मीटर कॉलम में ऐड करते हैं हम. 0 में 5 5, 5 में 1 6, 65 मीटर 77 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. Then B part. So we'll start with centimeter column. Okay. 7 में 2 9, 6 में 3 9. Then अब मीटर कॉलम में ऐड करेंगे. 5 में 2 7, 6 में 2 8, 1 as it is, right? So the answer will be 187 meter 99 centimeter. Okay. Then C part. Again we'll start with centimeters column. 8 and 7 15. 5 is written here, 1 is carried over. Then 1 2 and 9 12. 2 is written here, 1 is carried over here. Okay. Then 1 and 5 and 0 make 6. 7 and 3 10. 0 is written here, 1 is carried over. 1 and 1 2. The answer is 206 meter 25 centimeter. Okay. Now you can do these remaining parts by yourself. Okay. B. Subtract the following. One has been done for you. A part. 67 meter 57 centimeter minus 23 meter 12 centimeter. Okay. So here also we are starting with centimeter column first. Okay. 7 में से 2 गए 5, 5 में से 1 गए 4, then 7 में से 3 गए 4, 6 में से 2 गए 4. Okay. Answer is 44 meter 45 centimeter. Then B part. So 5 में से 3 गए 2, 6 में से 0 गए 6. Then meter column. 9 में से 5 गए 4. Again 9 में से 5 गए 4. 1 का 1 as it is. Answer is 144 meter 62 centimeter. Okay. Then C part. So 5 में से 3 गए 2. 7 में से 6 गए 1. Then 2 में से 1 गए 1. 9 में से 8 गए 1. 1 as it is. Right. Answer is 111 meter 12 centimeter. Okay. You can do the remaining ones by yourself.
Measurement of weight. The weight of an object is the measure of its heaviness, that is how heavy or light the object is. Different objects have different weights. Let's compare the weight of different objects. तो जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो बताता है उसकी हैवीनेस के बारे में कि कितना वो हैवी है, कितना या फिर लाइट है वो ऑब्जेक्ट. ओके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट वेट्स होते हैं. अभी हम कुछ कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में. ओके, सो देयर इज अ लायन एंड अ फॉक्स. नाउ अ लायन इज हेवियर देन अ फॉक्स, राइट? लायन जो होता है वो ज्यादा हैवी होता है, whereas fox is lighter in comparison with lion, right? Then there is a mouse and a rabbit. A rat is lighter than a rabbit. जो rat होता है वो lighter होता है in comparison with rabbit, right? Whereas rabbit is heavier than rat, right? Measurement of weight by standard units. We measure the mass or weight of an object in gram. Gram is the smaller unit of weight. For heavy objects, we use bigger unit called kilogram. 1000 grams equals to 1 kilogram. तो अगर हमें मास या वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर करना है तो हम ग्राम्स में मेजर करते हैं. जो स्मॉलर यूनिट है वेट की उसे हम ग्राम कहते हैं. हेवियर ऑब्जेक्ट्स के लिए हम बिगर यूनिट दैट इज किलोग्राम इसका यूज करते हैं. ओके, 1000 ग्राम विच इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. ओके, then the commonly used weights are given below. These are the commonly used weights: 50 gram, 100 gram, 200 gram, 500 gram, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg and 20 kg. For gram we write G in the short form. For kilogram, we write kg in the short form. Okay. Exercise 7C. A. Tick the heavier object. A part. So this is a watermelon, and then there is a mango. Okay. So the heavier one is watermelon, obviously. So we'll tick on this one. Then B part. Then there is a bus and a car. Bus is heavier than a car, so we'll tick on bus. Then C, lion and elephant. An elephant is heavier than lion, so we'll tick on this one. Then D, pen and a box. Obviously, a box is heavier than a pen, so we'll tick on this one. B, circle the unit you will use to weigh each of the following. Okay, A part. These are the oats packet. Okay, so kg / gram. So the answer is gram. Okay. Then B, vegetables in gram / kg. Answer is kg. Then C, apple. An apple only. Okay. kg / gram. Answer is gram. Then D, a car. Gram / kg. The answer is kg. Addition and subtraction of weight. Addition of weight. To add weights, arrange them in the correct columns of units and then add separately. Okay. तो जब हमें weights को add करना है, arrange करना है उन्हें correct columns में and then उन्हें add कर देना है. Okay. Example: add 23 kg, 342 grams and 42 kg, 235 grams. Solution. Step 1. Add the grams column. 342 plus 235 equals to 577 grams. Write 577 in the grams column. तो सबसे पहले सेपरेट कर लिए थे हमने एंड फिर हम ग्राम्स कॉलम में एडिशन करेंगे. सबसे पहले
2 and 5 7, 4 and 3 7, 3 and 2 5. So we have got 577 grams. Okay. Step 2, add the kilograms column. 23 plus 42 equals to 65 kilograms. Write 65 in the kilograms column. Thus 23 kg 342 gram plus 42 kg 235 gram equals to 65 kg 577 gram. Then हमें kg column में add करना है 3 and 2 5, 2 and 4 6. Okay, so the answer is 65 kg 577 gram. Subtraction of weight. To subtract weights, arrange them in the correct columns of units and then subtract separately. तो weight को subtract करने के लिए again column wise उन्हें separate करना है, then subtract कर देना है. Okay. Example, subtract 21 kg 254 gram from 88 kg 679 gram. Now the solution. Step 1, subtract the grams column. 679 minus 254 equals to 425 grams. Write 425 in the grams column. तो सबसे पहले हमने column wise separate कर लिया kg और grams को. Okay, फिर हमें grams में सबसे पहले subtraction perform करनी है. 679 को 254 में से 9 में से 4 गए 5, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 2 गए 4. Okay. Then step 2, subtract the kilograms column. 88 minus 21 equals to 67 kilograms. Write 67 in the kilograms column. Thus 55 kg 679 gram minus 21 kg 254 gram equals to 67 kg 425 grams. Then हमने 88 में से 21 subtract करना है kg column में. 8 में से 1 गए 7, 8 में से 2 गए 6. Okay. So the answer is 67 kg 425 grams. Okay. Exercise 7D. A, add the following. One has been done for you. A part. So here we need to add, right? So we have added these. 0 and 6 and 0 makes 6. Then 5 and 2 and 4 makes 11. 1 is carried over. Then 1, 4 and 3 makes 8. Answer is 816 kg. Okay. Then B part. Everything is in kg, right? So 7 and 3, 10. 10 and 5, 15. 5 is written here. 1 is carried over. 1 and 1, 2. 2 and 5, 7. 7 and 3, 10. 0 is written here. 1 is carried over. 1 and 1, 2. 2 and 2, 4. The answer is 405 kg. Okay. You can do the remaining ones by yourself. B, subtract the following. A part. Now again we will subtract and 6 में से 5 गए 1, 9 में से 3 गए 6 and 1 as it is and kg here. Okay. So the answer is 161 kg. Okay. You can do the remaining parts by yourself. Measurement of capacity volume. The capacity of a container tells that how much it can hold. It tells that how big a container is. When we find out how much liquid a container can hold, we are finding the capacity of the container. तो जो कैपेसिटी होती है किसी भी कंटेनर की वो हमें बताती है कि वो कंटेनर कितना होल्ड कर सकता है. ओके. देन ये हमें ये भी बताती है कि वो कंटेनर कितना बड़ा है. ओके. साइज में. देन जब हमें पता चलता है कि एक कंटेनर कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है तब हम उसकी कैपेसिटी पता लगा रहे होते हैं. ओके. Units of capacity volume. For measuring liquids, we need a unit. We measure liquids in liters. The capacity of any vessel is expressed in liters. The short form of liter is L. तो liquids को measure करने के लिए हमें एक unit चाहिए थी. Okay. And हम liquids को measure करते हैं liters में. जो capacity होती है किसी भी vessel की वो express की जाती है liters में. ओके. और जो शॉर्ट फॉर्म होती है लीटर की वो होती है एल. दिस इज
10 liters, then this one is 5 liters, 2 liters and 1 liter. To measure smaller capacities, we use smaller unit called milliliter. The short form of milliliters is ml. तो स्मॉलर कैपेसिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास स्मॉलर यूनिट है जिसको मिलीलीटर बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म है ml. ओके, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 milliliter. Addition and subtraction of capacity. Addition of capacity. To add the given capacities, arrange them in the correct columns of units and then add separately. तो अगर हमें कैपेसिटीज को भी ऐड करना है तो हमें कॉलम वाइज सेपरेटली उन्हें अरेंज करना है, देन ऐड करना है. ओके, एग्जांपल, add 25 liters 253 ml and 61 liter 342 ml. Solution. Step 1, add the ml column. 253 plus 342 equals to 595 ml. Write 595 in the ml column. So first we need to write separately column wise. यहाँ लीटर लिखा हमने, यहाँ ml लिखा. Then हम ml column में पहले add करेंगे. So 3 and 2 5, 5 and 4 9, 2 and 3 5. Okay. Then step 2, add the liters column. 25 plus 61 equals to 86 liters. Write 86 in the liters column. Thus 25 liters 253 ml plus 61 liters 342 ml equals to 86 liter 595 ml. Then हमें liters column को add करना है, right? So 5 and 1 6, 2 and 6 8. Okay. So the final answer is 86 liter 595 ml. Subtraction of capacity. To subtract the given capacities, arrange them in the correct columns of units and then subtract separately. अगर हमें subtract करना है capacities को, सबसे पहले वही column wise arrange करना है separately, then subtract करना है. Okay. Example, subtract 25 liters 234 ml from 65 liters 879 ml. Solution. Step 1, subtract the ml column. 879 minus 234 equals to 645 ml. Write 645 in the ml column. Then step 2, subtract the liter column. 65 minus 25 equals to 40 liters. Write 40 in the liter column. Thus 65 liter 879 ml minus 25 liters 234 ml equals to 40 liters 645 ml. Now we'll understand. Okay. सबसे पहले सेपरेटली कॉलम वाइज लिख लिया हमने, फिर हमें ml कॉलम को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, तो 9 में से 4 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 2 गए 6. दिस मच इज डन. देन हमें लीटर्स कॉलम पर आ रहा है, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे. 5 में से 5 गए 0, 6 में से 2 गए 4. ओके, सो द आंसर इज 40 liters 645 ml. गॉट इट? Exercise 7E. A. Tick the unit you will use to measure capacity in each of the following. Okay. A part, there is a water bottle, right? So now A part, there is a water bottle. Okay. We have option liter / ml. So it can be measured in liter as well as ml, but here I'll put tick on ml. Okay. Then B part, this is a water tank and we have option liter / ml. So this is it has bigger capacity, so it can be measured only in liters, right? Then C part, a tetra pack of milk. It can be measured in liter as well as ml, but here I'll put on ml. Tick. Okay. Then D, oil, right? So this can be measured. We have option ml / liter. So it can be measured in liters as well. So I'll put tick on liters. Okay. B, add the following. One has been done for you. A part is already given. 6 and 5
11, 1 is carried over, 1, 3 and 8 makes 12, 1 is carried over, 1, 2 and 1 makes 4. Answer is 421 liters. Then B part, 5 and 8, 13, 3 is written here, 1 is carried over, then 1, 3 and 8 makes 12, 2 is written here, 1 is carried over, 1, 6 and 1 makes 8. And liters, answer is 823 liters. Okay, you can do the remaining parts by yourself. C. Subtract the following, one has been done for you. A part is already done for us. Now 0 में से 6 subtract करना था, we can't subtract, तो हमने borrow किया यहाँ से, इसे cut किया, 8 आ गया, यहाँ 15 बनता, 14 आ गया, यहाँ 10 आ गया, 10 में से 6 गए 4, 14 में से 8 6 and 8 में से 2 subtract किया 6. Answer is 664 liter. Then B part, 0 में से 5 we can't subtract, right? So we have to borrow. हम यहाँ से borrow करेंगे, यहाँ 2 आ गया, 12, 11, 10, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 8 गए 3, 2 में से 1 गए 1. Answer is 135 liters. Okay, you can do the remaining ones by yourself. Objective skill, multiple choice questions, MCQs. Take the correct option. A part, meter is the standard unit of dash. We have options. First, weight. Second, capacity. Third, length. Answer is length. B. Very small units are measured in dash. We have options. First, kilometer. Second, millimeter. Third, centimeter. Answer is millimeter. Okay. Then C. The distance between two cities is measured in dash. We have options. First, kilometer. Second, centimeters. Third, liters. Answer is kilometers. B. Gram is the standard unit of dash. We have option. First, length. Second, weight. Third, capacity. Answer is weight. E. Milliliter is the smallest unit of dash. We have options. First, capacity. Second, weight. Third, length. Answer is capacity. Experiential learning, mental math. A. Fill in the blanks. A part, 172 kg plus 522 kg equals to dash kg. So we need to add them, right? The answer would be 694 kg. Okay. Then B part, 1000 liter minus dash equals to 144 liter. So the answer is 856 liter. Okay. Then C part, 1000 centimeter equals to dash meter. The answer is 10 meter. D. 990 centimeter minus 420 centimeter equals to dash centimeter. Answer is 570 centimeter. Okay. Then B part, match the following. A. Capacity with the third one, 1 liter. Okay. B. Weight, fourth one, 5 kg. Then C. Length, second one in centimeters or meter scale, this one is. Okay. D part, non-standard unit, which is this one, first one. Okay. Experiential learning, activity zone, solve the puzzle. First, what is standard unit of length? Answer is meter, right? So we have to find here meter from this word grid. Okay. So here is meter. I'll mark it. Then
Second, what is standard unit of capacity? Answer is liter. Okay. So here is liter. Third, what is standard unit of weight? Answer is kilogram. So here is kilogram. Then fourth, what is smaller unit of weight? Answer is gram. We are done with this. So I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye bye.